LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षित कल के साथ साथ NPS आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन जी। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निखिल। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है लालिमा। Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Key domestic stock indices ended in negative territory. Sensex tumbles 379 points. Nifty ends below 21,700. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays foundation stone of several development projects worth over 20,000 crore rupees in Tamil Nadu. And crude oil prices surge over 2% on disruption fears after latest Red Sea attack. घरेलू शेयर बाजार आज नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 379 अंक लुढ़का। निफ्टी 21,700 अंक के स्तर से नीचे पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया तथा आधारशिला रखी। और लाल सागर में हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत में 2% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की सबसे पहले शेयर बाजार की खबर के साथ में। तो भू राजनीतिक तनाव के बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज नुकसान के साथ बंद हुए। लाल सागर क्षेत्र में व्यवधानों के संबंध में जाहिर की जा रही चिंताओं के कारण उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली भी देखी गई, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अल्पकालिक बाधाएं और समुद्र के रास्ते ढुलाई की लागतों में वृद्धि कर सकती हैं। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.5% की गिरावट से 379 अंक नीचे आकर 71,892 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.35% की सुस्ती से 76 अंक लुढ़ककर 21,666 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की हम बात करें तो BSE मिड कैप सूचकांक 0.08% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.03% की नरमी दर्ज की गई। Key domestic stock indices ended in negative territory today over escalating geopolitical tensions and a substantial increase in crude oil prices. Profit booking was also evident at higher levels due to ongoing worries about disruptions in the Red Sea that could pose short-term hurdles for global supply chains and shipping costs. Sensex settled 379 points or 0.5% lower at 71,892, while the Nifty 50 finished 76 points or 0.35% down at 21,666. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.08% and the small-cap index fell 0.03%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 22 companies declined, while those of 8 companies appreciated. Mahindra & Mahindra declined 2.80%, Ultratech Cement lost 2.50%, and Kotak Mahindra Band fell 2.40%.
On the other hand, Sun Pharma rose 2.85%, Bajaj Finance jumped 1.80%, and Bharati Airtel added 1.10%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors declined, while 6 sectors logged gains. The capital goods sector declined 1.40%, and the Bankex sector slipped 1.20%, and realty sector lost 1%. On the other side, the healthcare sector rose 1.80%, services sector climbed 0.80%, and the metal sector soared 0.70%. The overall market breadth was positive as shares of 1,992 companies appreciated, while those of 1,811 declined. A total of 126 companies remained unchanged. So, Sushma, after touching 72,000 plus, why climb down at 71,892? When we talk about the Sensex, is it some geopolitical tensions? What else? Of course, the Red Sea factor also is there. What else? So, I think first of all, the markets, they've been having such a sustained bull run, and it was time for some profit taking. So that is also one of the reasons you are having profit booking, and this was expected. Certain correction in the market was anticipated. Secondly, of course, what precisely you said, these geopolitical tensions, what is happening in the Red Sea. Now, what has happened is that the United States Navy has been trying to bring together a coalition of countries to protect merchant shipping that is going through the Red Sea. Now, the Red Sea is the inlet to the Suez Canal, and about 42% of Asia-Europe trade goes through the Suez Canal. So this is a very, very critical route. Now, what has been happening is that these people who are in control of Yemen, they are known as the Houthi rebels, and they control a large part of Yemen. They are when you enter the Red Sea, there is a small strait. It's called the Bab el Mandab Strait, and that is between Eritrea and Yemen. So it is this narrow stretch where the Houthi rebels are firing missiles and firing drones and attacking with boats these merchant shipping vessels. The aim, of course, is for them, they are trying to support Hamas. And in that effort, they are attacking any ship that they feel is linked in some way to Israel. They are also keeping out any shipping that is linked to Russia or China. So that's the backdrop. But what happened just now, 1 or 2 days ago, is that the Houthi rebels, again, the boats came to board a merchant vessel, but the United States Navy came to protect this merchant vessel, and they shot some of these boats. Now, the worry is that this whole issue will become wider if the US enters in a bigger way, if the Houthi rebels, who are backed by Iran, if Iran enters in a big way. So this is the big fear that has now happened, and as a result of which you are having the stock markets, not just in India, but in all over the world. If you see in Asia and even in US, there is a lot of concern about it. Also, of course, there is the factor that the economic performance, for instance, in China has not been so good recently. The Chinese stock markets opened probably at the lowest ever level than they had in the last 4 to 5 years. So that is also one of the factors for Asian markets going down. But the Red Sea is, I think, the main issue right now. And any other alternative route would add many thousands of kilometers and thus escalate the oil price? Yes. So the ships are now, most of the shipping lines have already stopped moving through the Red Sea. They are going via the Cape of Good Hope, and this adds 6,000 nautical miles to the route, and naturally goods become more expensive. फिलहाल समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक को इस बार सुषमा जी हम चर्चा आपसे और भी करेंगे। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्र में। सुषमा जी, अभी ब्रेक से पहले जो भी बातें आपने कही वाकई वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं तमाम बातों में, लेकिन मेरा कुछ और मानना है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ इस बारे में। अगर हम पीछे 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए, कोविड भी आया, तमाम बातें हुई, लेकिन भारतीय शेयर बाजार एक ऐसी स्थिति में रहा जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन परिस्थितियों का भी भारतीय शेयर बाजार पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज की बात करते 379 अंक गिरा है, लेकिन अगर हम पीछे 1 महीने का भी देखते हैं रिकॉर्ड, तो कई हजार ये आगे बढ़ भी चुका है। तो आप क्या कहेंगे इस पर कि मेरा मानना सही है जो आपने कहा कि उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आज की बात कर रही थी जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपने बात कही है वो सही है। अगर आप पीछे देखें कोविड के वक्त, अगर आप देखें मार्च 2020 में मार्केट उस वक्त बिल्कुल क्रैश कर गई थी, लेकिन क्योंकि बहुत उसके बाद काफ़ी सारे डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स उन्होंने इक्विटीज़ में अपना पैसा डाला और मार्केट में आए, उस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स की जो तादाद थी बहुत बढ़ गई। और मार्च के बाद वो जो एक क्रैश के बाद उसके बाद रैली हुई। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी उस वक्त, लेकिन जैसे आपने कहा स्टॉक मार्केट्स बढ़िया चल रहे थे, बुल रन चल रहा था। 2020-2021 में बुल रन चल रहा था, जबकि हमारी इकोनॉमी की कंट्रैक्शन हो रही थी उस वक्त। तो उसके बाद जब यूक्रेन की जो मामला आया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की आप बात कर रहे हैं, पिछले साल उसके बाद भी मार्केट थोड़ी सी लुढ़की, उसके बाद फिर रैली आई है। हालांकि उस वक्त इस दौरान ये 2 सालों में यूएस फेडरल रिजर्व्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू किए क्योंकि इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए। लेकिन उस वक्त फिर क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट से चले गए, लेकिन जैसे मैंने कहा जो रिटेल इन्वेस्टर्स 2020 में आए और भी आए, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हमारी मार्केट को काफ़ी स्ट्रेंथ दिया और उन्होंने अपना पूरा अपना फेथ हमारे देश की जो आर्थिक जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसके में उन्होंने अपना फेथ डाला। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लॉन्ग टर्म में हालांकि वो भी हुआ, जैसे आपने कहा कोविड, यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, बाकी देशों में स्टॉक मार्केट्स लुढ़की और वो मतलब बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ बुल रैली चलती गई। पिछले साल भी बुल रैली चलती गई। हालांकि पिछले साल और इस साल हालांकि बहुत सारे देशों में इन्फ्लेशन की जो प्रेशर्स थे उससे सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, उस वजह से स्टॉक मार्केट्स और डिमांड भी कम हुआ, रिसेशनरी ट्रेंड्स हुए। तो फिर भी इन हालातों में एक्सटर्नल हेडविंड्स जो कहते हैं, फिर भी हमारी स्टॉक मार्केट्स में बुलिश ट्रेंड रहा। Can we say, yes, Nikhil, can we say, Sushma, that because we are a consumer-based economy, because traditionally we are also a savings-based economy, they go side by side. We are trained to save, in Indian family, typical Indian family thinks of saving first and then being a consumer, which is the other way around in the Western world, our developed economies, so to speak. We are also, so we are on strong fundamentals. Also the fact that FPI is pulling out money, that also did not shake our markets. We also during the pandemic and we converted the adversity into opportunity by exporting and making PPE kits and so on. Then when China the investors got put off with China, it was advantage India, advantage Vietnam, and add to that all the reforms that took place. All this has added to a robust economy, leading us to the 5th largest economy of the world. Absolutely. Well, this is of course, what you are saying is correct. The economic, right now, the fundamentals, the data that is coming in is certainly very positive. The latest GDP growth for the second quarter of the year was unexpectedly high at, I think, 7.6%. It was lower than the first quarter of 7.8%, but it had been anticipated even by the Reserve Bank of India that the second quarter would be about 6.8 or 6.9, but it went up to 7.6, which gives rise to the expectation that in the full year, instead of a 6.5% growth, as has been estimated by most analysts, by most agencies, investment agencies, it is likely to reach 7%. So we remain the fastest growing major economy in the world.
सुषमा, अभी अगर हम शेयर मार्केट में देखते हैं तो चूंकि इंडिया का बहुत ही फेवरेट मार्केट आईटी सेक्टर का हमेशा से रहा है, अब धीरे धीरे एफएमसीजी भी हम बहुत तेजी से ग्रैब कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर आ रही हैं, बैंकिंग हुआ, ऑटो हुआ, इन सब में काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो मिड कैप इंडेक्स पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसके लिए क्या कारणों को जिम्मेदार माना जा सकता है? देखिए, जो इस वक्त मिड कैप इंडेक्स में जो अभी प्रेशर जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल ये टेम्पररी होगा। अगर आप देखेंगे कि आगे वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब बड़े ध्यान से अपने इन्वेस्टमेंट्स को चुनते हैं, और नेचुरली वो, क्योंकि वो नए इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादातर, जो जैसे मैंने कहा, जो पहले के इन्वेस्टर्स तो बहुत हैं, पुराने इन्वेस्टर्स, बट जो 2020 में आए थे नए इन्वेस्टर्स, जो युवा पीढ़ी के हैं, वो अपनी जो सिलेक्शन जो करते हैं, चुनते जो हैं स्टॉक्स, वो उस बेसिस के अपना स्टडी करते हैं और जो एडवाइस लेते हैं इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जो इन चीज़ों के ऊपर राय देते हैं, तो जनरली वो लार्ज कैप्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वो आ रहे हैं मार्केट में। तो अब मेरे ख्याल में वो मिड कैप्स, छोटी कंपनीज में उनका जो इंटरेस्ट है वो आना शुरू होगा। And the fact that we have now the highest ever demat accounts kind of enforces the common citizens' trust and confidence in the Indian markets and in the Indian economy. Absolutely. The number of demat accounts is really gone up exponentially. And again, this is from 2020 onwards, this kind of thing. So as you said, it was adversity turned into opportunity as far as the stock markets were concerned. और अब रुपए पे नजर डालने तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 32 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक आज उछाल के साथ 101.68 पर था। और सुषमा, सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कल पुर्जों के उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना PLI की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है, जो काफी लंबे समय तक 5 वर्षों तक लागू रहेगी। आपको क्या लगता है कि अधिक स्पष्टता इससे आएगी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? और अगर ईवी की हम बात करते हैं तो ये कितना फायदेमंद होगा हमारे लिए? देखिए, PLI स्कीम, पहले तो ये है कि PLI स्कीम तो बहुत ही फ़ायदेमंद है उद्योगों के लिए, और उद्योगों के लिए अगर फ़ायदेमंद है, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो हमारे पूरे आर्थिक जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात ये है, ऑटोमोटिव सेक्टर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पूरे अगर हम अपना उद्योग का क्षेत्र देखें तो 50% मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही के अकाउंट्स फॉर दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है। तो अगर इसका ये बढ़ जाता है PLI से, और बढ़ने वाला है जरूर, क्योंकि हमारी बहुत इस वक्त बहुत मजबूत इंडस्ट्री है, और वो बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से। और जैसे आपने कहा, जो नया क्षेत्र है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसमें बहुत जल्दी बढ़ोतरी हो रही है। और इस वक्त अगर आप नंबर्स देखें, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इस परसेंटेज बढ़ सकता है, परसेंटेज ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है। और लगता है कि जो खरीदने वाला बंदा है, जो कंज्यूमर है, वो अब सोच रहा है कि मैंने अगर गाड़ी खरीदनी है, पैसेंजर व्हीकल अगर मैंने खरीदनी है, तो अगर मुझे 10 साल और 15 साल के आगे मुझे देखना है, तो मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना चाहिए। क्योंकि एक तो जो तेल के दाम है, पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हैं, डीजल के दाम और भी महंगे हैं, और ये सस्टेनेबल भी है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है। तो ये सारी चीज़ें देख के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कंज्यूमर्स इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। और आप देखेंगे ऑटोमोबाइल कंपनीज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो उत्पादन है वो ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दो बातें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ जहां कंपनीज को बढ़ावा दिया जा रहा है PLI स्कीम्स के थ्रू, और भी कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के साथ में, जो कंज्यूमर है उसे भी सब्सिडी दी जा रही है। तो सरकार दोनों तरफ से दोनों को बैलेंस कर रही, ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो सके। हाँ, वो सब्सिडी स्कीम्स जो हैं वो अभी इस वक्त चल रही हैं, लेकिन वो भी टाइम बाउंड है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कंज्यूमर्स खरीदेंगे। All right, more on this and other stories later. Friends, let's go in for a short commercial break. Shall be back soon.
वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्र में। अब एशिया और यूरोपीय बाजार पे हम नजर डालते हैं। एशियाई बाजारों में आज अधिकतर नकारात्मक रुख देखने को मिला। केवल दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 1.5% के नुकसान में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.4% की गिरावट आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% लुढ़क गया। एशियाई बाजारों में ये गिरावट चीन के विनिर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्रों में बढ़ती गड़बड़ियों को उजागर करने वाले आंकड़ों के सामने आने के बाद देखी गई है। वहीं यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो दिन के कारोबार में यहां मिला जुला रुख था। लंदन का FTSE 100 0.10% के नुकसान में था। वहीं जर्मनी का डेक्स 0.4% ऊपर आकर कारोबार कर रहा था। उधर फ्रांस के कैक में 0.1% की बढ़त देखी गई। All right, let's move to another story. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of multiple development projects worth over 20,000 crore rupees in Tiruchirappalli, Tamil Nadu today. These projects belong to aviation, rail, road, oil and gas, shipping and higher education sectors. Mr. Modi also inaugurated the new terminal building of Tiruchirappalli International Airport, built at a cost of over 1,100 crore rupees. Speaking on the occasion, Prime Minister said these projects will strengthen the progress of the state and steer economic growth. He said the new projects will ease travel and create thousands of employment opportunities for the youth of the state. Sushma, these developments can't be seen in isolation. After all, when you talk about the expressways, when you talk about time shortened, travel time shortened between Delhi and Mumbai and so many such highways, we are actually also talking about great logistics and the surely that will boost our economy. It is boosting our economy. How do you view this? Because there are ports. If you talk of increasing exports, you got to have a lot of ports. Absolutely. We are building many international airports, and all this is interlinked with economy. Yes. I think, of course, Tamil Nadu is also already one of the most highly developed states. It has very good infrastructure. The fact that they're going to have so many more infrastructure, rail, you've listed rail, road, oil and gas, shipping, and higher education. And I think the last one, higher education, is extremely important. A state like Tamil Nadu, where you find so many young people which have gone into high technology sectors, whether it is science, whether it is computers, this is a region from which we get some of our most brilliant scientists. So that's a great thing. But coming back to the infrastructure, I think it's very significant that Prime Minister Modi inaugurated the new terminal building of Tiruchirappalli. Sorry, I hope I have not pronounced it wrongly. International Airport. It's a few years back one would never have thought that you have an international airport at a place like this that is one of the smaller metros in the southern states, but it has come up, and there is obviously a demand for it, and it will be used. There'll be a lot of passengers coming through it, and as well as cargo. This is also part of the aviation ministries and the government's drive to set up a large number of airports in smaller metros, in tier 2 metros. Yes. And the number of airports in the country has gone up exponentially. Again, as you pointed out, it's very important, not just for domestic travel, which is also important. That's something I think that the government and Prime Minister Modi had highlighted when he took over in 2014, the fact that people should have the ability to travel comfortably by air, and they should it should be affordable for them. So that's number one. Number two is that it will promote movement of goods within the country and abroad, especially for exports. A lot of goods can be exported rather than going through ports. So this is something that is certainly going to kickstart further development in Tamil Nadu.
And so much money is being poured into development, Sushma. We see that the Prime Minister often is going to many places, or many states, and so many developmental projects are happening. I'm sure with all the record GST collections, with all the direct, indirect taxes that we are collecting, this would all be going. As we have a good ad which is by the government saying, "Kardaata agar aap ho to aap देश की उन्नति में आपका बहुत बड़ा योगदान है." Yeah, absolutely. So the income taxpayer contributes a lot to the development of the country. Our money going into all this. Yes. सुषमा, थोड़ा सा लीक से हट करके मेरा सवाल है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, आर्थिक मोर्चे पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर की अगर हम बात करें तो फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए बहुत ही शानदार रहा। एक दिन में इतने रिकॉर्ड्स हुए जितने कि पिछले 7-8 साल में शायद हुए थे, उतने मिलाकर के सिर्फ एक दिन में हुए। आर्थिक मोर्चे पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कल्चर बड़े महानगरों के साथ साथ छोटे शहरों में बढ़ा है। कोई संदेह नहीं कि आर्थिक गतिविधियों को एक बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह से फूड कंपनीज को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पैसा बाहर आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं। इसे बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्टेप कुछ साल पहले लिए गए थे, अब उनका असर देखने को हमें मिल रहा है? क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ हमें इनसे फायदा हो रहा है। हाँ, देखिए, ये स्पिल, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आपने बात की कि मतलब इसका जो असर हो रहा है छोटे शहरों में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बड़ी डिलीवरी कंपनीज हैं, जोमेटो है, स्विगी है, उनके अलावा भी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं। और अगर आप देखें तो कैफ़ेज़ भी अपने आप भी आजकल होम डिलीवरी कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये प्लेटफॉर्म्स को वो उतना कमीशन दे कि आप हमें डायरेक्टली फ़ोन कीजिए। तो ये जो कल्चर है कि भाई हमें अपने घर में और तरह तरह के खाने का मज़ा लिया जाए, तो इसका तो बहुत ही बढ़िया आपने ये आंकड़ा बताया। Endorsing what Nikhil says about economy related to ordering food, I'm sure mothers and nutritionists are now totally in a bad mood, saying children are all the time ordering food from outside. Anyway, let's not get stuck and play spoil sport. Let's move on to another story regarding oil, very integral to our country's economy, any country's economy for that matter. Well, today oil prices surged over 2%, driven by concerns over potential supply disruptions in West Asia following the recent attack on a container ship in Red Sea. Additionally, optimism surrounding Chinese demand also contributed to the upward momentum in prices. In intraday trade, Brent crude was trading at 2.20% higher at $78.75 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading 2.20% up at $73.24 per barrel when reports last came in. A quick comment on oil, Sushma. Where do you see it going? Well, we talked already about the Red Sea, so I won't repeat that. But the fact is that the first impact of any Red Sea crisis is going to be on crude oil, because crude oil has to go again through this strait, and a lot of the crude oil tankers have been targeted by the Houthi rebels. So as of now, there's a 2% spike. Also, as of now, the prices in the world market have been fairly subdued, even though OPEC Plus the cartel has been trying to cut production quotas and try to push up prices. But this has not happened because global demand has been slowing. China, we've just talked about the poor economy. The demand from the largest oil importer is not so high. Crude inventories with the US are growing up. Availability of crude from the US as well as all over the world is rising. So the main factor that could push up prices is continuation of the Red Sea crisis. और अब गोल्ड पर नजर डालते हैं तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 139 रुपए की बढ़त से 63,459 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं पर मार्च अनुबंध वाली चांदी 250 रुपए के उछाल के साथ 74,640 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। So thank you, Sushma, for coming to our studios and updating us with your views and reviews. And friends, before we wind up, here's a reminder of the headlines. Key domestic stock indices ended in negative territory. Sensex tumbles 379 points. Nifty ends below 21,700. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays foundation stone of several development projects worth over 20,000 crore rupees in Tamil Nadu. And crude oil prices surge over 2% on disruption fears after latest Red Sea attack. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Nikhil signing off. Namaskar. नमस्कार। सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी। मेरे पास मनपसंद जॉब तो है, लेकिन पेंशन नहीं है। मेरा रिटायरमेंट नजदीक है, पर मेरे पास पेंशन नहीं है। आप लोगों की परेशानी का समाधान है LIC's न्यू पेंशन प्लस, जो देता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के साथ गारंटीड एडिशंस और साथ ही पार्शियल विड्रॉल भी। इस पॉलिसी के निवेशित पोर्टफोलियो में निवेशित राशि का जोखिम पॉलिसी धारक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें। LIC हर पल